Hello guys, welcome to all information for visually impaired my official YouTube channel। यहाँ आप सभी को मिलती हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैग के साथ ज्ञानवर्धक टेक्नोलॉजी जॉब अलर्ट से संबंधित नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक्स ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में। गाइज, आज की वीडियो का टाइटल पढ़ के आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे और किस वैकेंसीज पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि भाई जो लोग भी IBPS SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज़ हैं उसका वेट कर रहे थे, तो वो वैकेंसीज़ आपके सामने लाइव आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि जो IBPS SO का नोटिफिकेशन आया है, इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है इसमें विजुअली इम्पेयर्ड की, और कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। IBPS के द्वारा आपको पता है विभिन्न बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनके द्वारा वैकेंसीज़ को फिलअप किया जाता है। और उसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि भाई कौन कौन से क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। लगभग इसमें लगभग अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, वो आगे आपको जानने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यदि हम बात करें, इसका जो प्री का एडमिट कार्ड है वो आपका कब आएगा, आपका प्री का एग्ज़ाम कब होगा, आपका मेंस का एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, उसके अलावा इंटरव्यू का एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका इंटरव्यू कब होगा, मतलब सारी चीज़ें डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई हैं और आपको इस वीडियो में बताई गई है। और बिल्कुल एग्जैक्ट डेट है सारी आपकी, यूँ कहें एक प्रॉपर डेट्स यहाँ पे दे दी गई हैं। भाई आपका एग्ज़ाम्स वगैरह कब कब होने वाला है और किस किस प्रकार से आपकी चीज़ें चलने वाली है, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा कफ है मुझे, इसलिए थोड़ा सा वॉइस में डिस्टर्बेंस आपको हो रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप झेलिएगा। और यदि मैं बात करूँ इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका क्या रहेगा, आपकी राइटर यानी कि जो स्क्राइब की गाइडलाइन है वो कौन सी चलने वाली है इसमें, ऐसी तमाम जानकारी आपको आज की वीडियोज़ में मिलने वाली है। आपका सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन सा सेंटर आप ले सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, सेंटर्स की भी डिटेल इसमें दी गई है, ठीक है। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं अगर आप इस वैकेंसीज़ के इच्छुक हैं तो, ठीक है। और जब भी इसका एडमिट कार्ड आएगा प्री का, या कोई रिज़ल्ट आएगा या कोई स्कोर कार्ड आएगा, मेरे द्वारा हर एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा भाई इसकी क्या क्या डिटेल्स आपको जो 1 अप्रैल तक, जब तक इसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता है, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर आपको हमारे चैनल के थ्रू हर एक वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, ठीक है। और यदि इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, ये जो वैकेंसीज़ है दोस्तों ये हर साल आती हैं, इस साल की ये निकल चुकी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस आपकी है, चूज़ कर सकते हैं कि आपको किन किन वैकेंसीज़ को फिल करना है और किसको नहीं करना है, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट है वो 1 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक चलने वाली है, ठीक है। 1 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक आप कभी भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो इसका प्री का एग्ज़ाम होने वाला है आपका वो 24 दिसंबर को होगा, और जो इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा वो आपका 29 जनवरी को होगा, ठीक है। प्री का जो एडमिट कार्ड है वो आपको दिसंबर में मिल जाएगा और जो मेंस का एडमिट कार्ड है वो आपको जनवरी में मिल जाएगा। आपका इंटरव्यू फरवरी में होने वाला है और फरवरी में ही आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिनेरियो चलने वाला है। तो बाकी डिटेल नोटिफिकेशन के लिए चलिए चलते हैं अपने वॉलंटियर के पास और देख लेते हैं भाई कौन कौन सी वैकेंसीज़ हमारे लिए हैं और कौन कौन सी नहीं हैं, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि ये वैकेंसीज़ आपके लिए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि ऐसी वैकेंसीज जब भी आएँ तो मैं आपके लिए वीडियो ला सकूँ, ठीक है। और गाइज़, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ये कंटेंट पसंद कर रहे हैं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो गाइज़ अपना लाइक कर दिखा के, मतलब कि लाइक का बटन दिखा के, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका लाइक मुझे चाहिए एक, ठीक है। आप लाइक का बटन दबाएं और मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। हाँ, अब सही बोला मैंने, वो बीच में कई बार क्या होता है कुछ शब्द इधर उधर हो जाते हैं ना, तो ये थोड़ी सी एक कॉमेडी थी,
चलिए कोई बात नहीं। और आप प्लीज़ गाइज चैनल पे अगर हमारे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करें, क्योंकि इसी तरह की जो वैकेंसी डिटेल है जो कि दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए होती है, वो हमारे चैनल के द्वारा हर वैकेंसीज की अपडेट दी जाती है, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो, बैंकिंग की हो, डीआरडीओ की हो, ईएसआईसी की हो। और हाँ दोस्तों, डीआरडीओ का नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, उसका जो डिटेल वीडियो वो भी आपको 1 या 2 दिन में चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इस फॉर्म को भरेंगे या नहीं भरेंगे, ये वैकेंसीज आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको वॉलंटियर्स के पास लिए चलते हैं और देख लेते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन। Hello friends, welcome to Information for Visually Impaired YouTube channel. Today we will talk about the recruitment of Specialist Officer in Participating Banks, which is organized by Institute of Banking Personnel Selection or IBPS. So first let us talk about the important participating banks which will be conducting these examinations. One is Bank of Baroda, Canara Bank, Indian Overseas Bank, UCO Bank, Bank of India, Central Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Maharashtra, Indian Bank, and Punjab and Sindh Bank. Now let us talk about the tentative schedule and the important dates for the examination. So the online registration including edit or modification of application by candidates begins from 1 November 2022 till 21st November 2022. The payment of application fees / intimation charges, which will be online, also begins from 1 November 2022 up till 21st November 2022. Then the download of call letters for online preliminary examination will be in December 2022. Then the preliminary online examination will be held from 24 December 2022 till 31st December 2022. And the result of the online preliminary examination will be declared in January 2023. Then again, the download of call letter for online main examination will also be in January 2023. And again, the main online examination will be held on 29th January 2023. Then the declaration of result of online main examination will be in February 2023, and also the download of call letters for interview will also be in February 2023. Then the interview will be conducted in February or March 2023, and at last the provisional allotment will be done by April 2023. Now talking about the relaxation of upper age limit, so persons with benchmark disability will have an age relaxation of 10 years. Now let us talk about the guidelines for persons with benchmark disability using the service of Scribe. So the visually impaired candidates and candidates whose writing speed is adversely affected permanently for any reason can use their own Scribe at their cost during the online examination, which is preliminary and main. In all such cases where a scribe is used, the following rules will apply. The candidate will have to arrange his or her own scribe at his or her own cost. The scribe should be from an academic stream different from that stipulated for the post. Both the candidate as well as scribe will have to give a suitable undertaking confirming that the scribe fulfills all the stipulated eligibility criteria for a scribe mentioned above. Further, in case it later transpires that he or she did not fulfill any laid down eligibility criteria or supposed material facts, the candidature of the applicant will stand cancelled irrespective of the result of the CRP. Those candidates who use a scribe shall be eligible for compensatory time of 20 minutes or otherwise advised for every hour of the examination. The scribe arranged by the candidate should not be a candidate for the online examination under CRP SPL-12.
If violation of the above is detected at any stage of the process, candidature for CRP of both the candidate and the scribe will be cancelled. Candidates eligible for and who wish to use the services of a scribe in the examination should invariably carefully indicate the same in the online application form. Any subsequent request may not be favorably entertained. Only candidates registered for compensatory time at the time of online registration will be allowed such concessions, since compensatory time given to candidates shall be system-based. It shall not be possible for the test conducting agency to allow such time if he or she is not registered for the same. Candidates not registered for compensatory time shall not be allowed such concessions. During the exam, at any stage, if it is found the scribe is independently answering the questions, the exam sessions will be terminated and candidature will be cancelled. The candidature of such candidates using the services of a scribe will also be cancelled if it is reported after the examination by the test administrator personnel that the scribe independently answered the questions. In such cases, the candidate and the scribe may also be debarred either permanently or for a specified period from all CRP examinations. Now, coming specifically to the guidelines for visually impaired candidates. So, visually impaired candidates who suffer from not less than 40% of disability may opt to view the contents of the test in magnified font, and all such candidates will be eligible for compensatory time of 20 minutes for every hour or otherwise advised of examination. The facility of viewing the content of the test in magnifying font will not be available to visually impaired candidates who use the services of a scribe for the examination. Now let us talk about the structure of the examination. So first we will talk about the syllabus of the preliminary examination for different posts. So for the post of law officer and Rajbhasha Adhikari, there will be 3 sections. First is English language, which will have 50 questions and a maximum of 25 marks. And for this, 40 minutes will be allotted. The second section is reasoning, which will consist of 50 questions and a maximum of 50 marks. And also 40 minutes will be allotted for the same. And the third is general awareness with special reference to banking industry. This section also has 50 questions and a maximum of 50 marks. So in total there are 150 questions with a maximum of 125 marks for this post. Now for the post of IT officer, agriculture field officer, HR personnel officer and marketing officer, the syllabus is as follows. There will be 3 sections. The first is English language. It will have 50 questions with a maximum of 25 marks, for which 40 minutes will be allotted. Second is reasoning, which also has 50 questions and a maximum of 50 marks, for which also 40 minutes will be given to complete this section. And third is quantitative aptitude. This section will have 50 questions and a maximum of 50 marks, for which 40 minutes will be given to complete this paper. So in total, this examination will have 150 questions with a maximum of 125 marks. Now coming to the main examination. Now before talking about the main examinations, in the preliminary examination, candidates have to qualify in each of the 3 tests by securing minimum cutoff marks to be decided by IBPS. Adequate number of candidates in each category as decided by IBPS depending upon requirements will be shortlisted for online main examination. Now let us talk about the syllabus of main examination for the post of law officer, IT officer, agriculture field officer, HR personnel officer and marketing officer. So the name of the test for this examination is professional knowledge, which will have 60 questions and a maximum of 60 marks. The medium of examination will be English and Hindi, and duration to complete this paper will be 45 minutes. Now for the post of Rajbhasha Adhikari, there will be 2 tests. One is professional knowledge, which is objective. This section will have 45 questions, and the second section is professional knowledge, will be descriptive in nature, and this will have 2 questions. So
the total marks for both the sections is 60 marks, and the medium will be in English and Hindi, and for each section 30 minutes will be allotted to complete the sections. Now let's come to the most important section of this notice. So now we'll talk about the vacancies for the VI candidates in different banks for different posts. So for the post of IT officer scale 1, there is only one seat for the VI candidate and in only Union Bank of India. Then for the post of agricultural field officer scale 1, there is one seat for VI candidate in Punjab National Bank and 2 seats for VI candidates in Union Bank of India. Then there are no seats for the Rajbhasha Adhikari scale 1 officers for the VI candidates in any of the banks. Again, there are no seats for law officer scale 1 for VI candidates in any banks. Then coming to the post of HR/personal officer scale 1, there is one seat for VI candidate in Union Bank of India. And then for the post of marketing officer scale 1, there are 2 seats for VI candidates in Union Bank of India. Now let us talk about the main examination centers in different cities of different states. So in the state of Andaman and Nicobar, for the preliminary examination center, the center will be at Port Blair, and again the main examination center will also be at Port Blair. In the state of Andhra Pradesh, the preliminary centers are Chirala, Chittoor, Guntur, Kadapa, Kakinada, Kurnool, Nellore, Ongole, Rajahmundry, Srikakulam, Tirupati, Vijayawada, Vishakhapatnam, and Vizianagaram. And for the main examination, the centers are at Vijayawada and Vishakhapatnam. In the state of Arunachal Pradesh, the preliminary center and the main examination center will be at Nahar Lagoon. In the state of Assam, the preliminary examination centers will be at Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Silchar, Tezpur, and the main examination center will be at Guwahati. In the state of Bihar, the preliminary centers will be at Arrah, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Muzaffarpur, Patna, and Purnia. And the main examination center will be at Patna. In the Union Territory of Chandigarh, the preliminary center and the main examination center will be both at Chandigarh/Mohali. In the state of Chhattisgarh, the preliminary examination centers are Bhilai Nagpur, Bilaspur, and Raipur, and the main examination center will be at Raipur. In Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, the preliminary centers will be at Surat and Jamnagar, and the main examination center will be at Surat. In Delhi, the preliminary centers are Delhi/New Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Greater Noida, and Gurugram. And the main examination centers again are Delhi, New Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Greater Noida, and Gurugram. In the state of Goa, both the preliminary and the main examination centers will be at Panaji. In Gujarat, the centers for preliminary examination are Ahmedabad, Anand, Gandhinagar, Himmatnagar, Jamnagar, Mehsana, Rajkot, Surat, and Vadodara. And the main examination center is at Ahmedabad. In the state of Haryana, the preliminary examination centers are at Ambala, Faridabad, and Gurugram. And the main examination center will be at Ambala. In Himachal Pradesh, the preliminary examination centers are Bilaspur, Hamirpur, Mandi. And the main examination center is at Hamirpur. In Jammu and Kashmir, the preliminary examination centers are Jammu, Samba, and Srinagar. And the main examination center is at Jammu and Srinagar. In Jharkhand, the preliminary examination centers are at Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, and Ranchi. And the main examination center will be at Ranchi. In the state of Karnataka, the preliminary examination centers
are Bengaluru, Belgaum, Bidar, Gulbarga, Hubli, Mangalore, Mysore, Shimoga and Udupi. And the main examination center will be at Bengaluru and Hubli. In the state of Kerala, the preliminary examination centers are Alappuzha, Kannur, Kochi, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Thiruvananthapuram and Trichur. And the main examination center will be at Kochi and Thiruvananthapuram. In Ladakh, the preliminary and main examination center will be at Leh. And in Lakshadweep, the preliminary and main examination center will be at Kavaratti. In the state of Madhya Pradesh, the preliminary examination center will be at Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Satna and Ujjain. And the main examination center will be at Bhopal. In the state of Maharashtra, the preliminary examination centers are Amravati, Aurangabad, Jalgaon, Kolhapur, Latur, Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Nagpur, Nanded, Pune and Ratnagiri. And the main examination centers are Aurangabad, Mumbai/Thane/Navi Mumbai, Nagpur and Pune. In Manipur, both preliminary and main examination centers are at Imphal. And in Meghalaya, the centers are Shillong. In Mizoram, both the centers are in Aizawl. In Nagaland, the centers will be preliminary and main examination center will be in Kohima. Then in the state of Odisha, the preliminary centers are Balasore, Berhampur, Bhubaneswar, Cuttack, Rourkela and Sambalpur. And the main examination center will be in Bhubaneswar. In Puducherry, the preliminary and the main examination centers is obviously Puducherry. Then in Punjab, the preliminary centers are Amritsar, Bhatinda, Jalandhar, Mohali and Patiala. And the main examination centers are Jalandhar, Mohali and Patiala. In the state of Rajasthan, the preliminary examination centers are Ajmer, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar and Udaipur. And the main examination centers are in Jaipur and Udaipur. In Sikkim, both the preliminary and the main examination centers are in Bardang/Gangtok. In Tamil Nadu, the preliminary centers are at Chennai, Coimbatore, Madurai, Nagercoil, Salem, Thanjavur, Tiruchirappalli, Tirunelveli and Vellore. And the main examination centers are Chennai, Madurai and Tirunelveli. In the state of Telangana, the preliminary centers are in Hyderabad, Karimnagar, Khammam and Warangal. And the main examination center will be in Hyderabad. In Tripura, both the preliminary and the main examination center will be at Agartala. In the state of Uttar Pradesh, the preliminary centers are at Agra, Aligarh, Bareilly, Gorakhpur, Kanpur, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Prayagraj and Varanasi. And the main examination centers will be in Lucknow, Meerut and Prayagraj. In the state of Uttarakhand, the preliminary centers will be in Dehradun, Haldwani and Roorkee. And the main examination center will be in Dehradun. And at last, in the state of West Bengal, the preliminary centers are in Asansol, Durgapur, Greater Kolkata, Hooghly, Kalyani and Siliguri. And the main examination center will be in Greater Kolkata and Siliguri. So that's all for today. Have a good day.